Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education. And today is our important topic, rather an important question. The question is, adolescence is a period of stress and strain, storm and strife. Discuss. So, the term, the saying, adolescence is a period of stress and strain, storm and strife. This has been said by Stanley Hall, an educationist, and this statement is justified. Adolescence is considered a stormy age. जो एडोलसेंस पीरियड होता है, बलोगियत का दौर होता है, ये एक स्टॉर्मी एज कंसिडर की जाती है बिकॉज all the developments during this stage reach their maximum and create various kinds of disturbances among adolescents. जो ये पीरियड होता है, बलोगियत का दौर जो होता है, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स रोनमा होती है एक एडोलसेंट में, and these developments create a sense of disturbance in the adolescent. The developments reach their maximum. जो नशोनुमा होती है वो मैक्सिमम तक चली जाती है. With the result, an adolescent gets disturbed. Adolescence is a period of transition and rapid change. जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि एडोलसेंस का पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है. इसमें एक इंसान को तब्दीली आ जाती है, तब्दीलियाँ रोनमा हो जाती है एक इंसान में, एंड रैपिड चेंज, और इसमें तेज़ चेंज आती है. तब्दीली जो होती है वो तेज़ तर तब्दीली होती है. नेदर द पर्सन इज कॉल्ड ए चाइल्ड नॉर एन अडल्ट. एक शख्स जो होता है ना वो बच्चा कहलाता है ना वो एक अडल्ट कहलाता है, बालिग कहलाता है. यानी कि इन बिटवीन दीज टू, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, an individual is in between childhood and adulthood because of the individual. An individual has crossed the childhood and yet to reach the adulthood. उसने childhood cross किया होता है और वो adulthood में अभी नहीं आया होता है, यानी कि वो adolescence में होता है. During this stage, there is a rapid change in physical, psychological and sociological aspects of individual along with values, attitudes, interests and behaviors. इस दौर में, बलोगियत के दौर में, जो एक बच्चा होता है, एक इंडिविजुअल होता है, whether it's a boy or a girl, he undergoes a rapid change in physical, psychological and sociological aspects of individuals along with values. और उसमें जो एक शख्स होता है उसमें तब्दीली आती है, जैसे कि फिजिकल यानी कि जिस्मानी तब्दीली उसमें आती है, दिमागी तब्दीली उसमें आती है, समाजी तब्दीली उसमें आती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उसकी तब्दीली आ जाती है. और उसके वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट्स और उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ों में तब्दीली आ जाती है और वो भी रैपिडली आ जाती है. Thus, consistency and inconsistency is found out in the life cycle. इसमें कहीं पे consistency रह जाती है और कहीं पे inconsistency रह जाती है, यानी कि इसमें तनाव रह जाता है. One more thing is abnormal feelings arise due to the rapid physical changes. इसमें abnormal feelings arise हो जाती है, डरावनी feelings इसमें arise हो जाती है due to the rapid change. जो इसमें ज़्यादा तेज़ तब्दीली हो जाती है, उन्हीं की वजह से इसमें अलग अलग जज्बात उभर जाते हैं. The aspect like fatness, tallness, facial features, etc. जो कुछ एस्पेक्ट्स है जैसे कि फैटनेस यानी मोटा हो जाना, टॉलनेस लंबा हो जाना, और जो फेशियल फीचर्स होते हैं यानी कि इंसान के दिखावे में भी तब्दीली आ जाती है. All these factors they are disturbing
among the adolescents. اس سے ایک جو adolescent ہوتا ہے اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، جیسے کہ ٹالنس ہے یا فیٹنس ہے یا فیشل فیچرس ہے، ان چیزوں سے ایک adolescent میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے. Sometimes conflict arises between parents and adolescents on the general situation or on the selection of branches for career. کبھی کبھار کنفلکٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے بچے اور والدین کے درمیان فار چوزنگ آف دی کیریئر کے بارے میں کبھی کبھار یہ کانفلکٹس بھی ارائز ہو جاتے ہیں. اٹس اے پیریڈ آف انریئلزم. یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اٹس دا پیریڈ آف انریئلزم، اٹس ناٹ دا پیریڈ آف ریئلزم. اس میں ریئلٹی جو ہوتی ہے انریئلزم زیادہ ہو جاتا ہے. During this period, the adolescents' aspirations and achievements etc. are more idealistic than realistic, which sometimes hurt and disappoint them. جو اس میں فیلنگس ہوتی ہے وہ انریئلسٹک ہوتی ہے، نہ کہ ریئلسٹک، یعنی وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی ہیں، انریئلسٹک ہوتی ہیں. ابھی انہوں نے اچیو نہیں کرا ہوتا ہے کچھ، اور وہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے، یعنی کہ خیالی ہوتا ہے، نہ کہ ریئلسٹک ہوتا ہے، ریئل نہیں ہوتا ہے، پختہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو اسی وجہ سے وہ جو ایڈولسنٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگس کبھی کبھار ہرٹ ہو جاتی ہے، ود دا ریزلٹ اس میں ٹینشن اور تناؤ رہ جاتا ہے. کنکلوڈنگلی، heightened emotionality, daydreaming and ventures, intense affections and stirring of heart create a sense of storm and strife among adolescents. تو آخر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اس میں ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے، ایموشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور وہ ایموشنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو یہ پیریڈ ہے اس سے ایک بچے میں، ایک انڈیویجول میں اسٹارم اور اسٹرائف، یعنی کہ پرتناؤ رہ جاتا ہے یہ پیریڈ. I hope you would have understood this lecture. Thank you very much.